Good morning to all of you. My name is Rabiya from class 10 and my project is watercycle. Watercycle involves many processes like evaporation, condensation and precipitation. और जब से रोशनी जब हमारी पृथ्वी पर जब पड़ती है तो हमारी पृथ्वी पर जो मौजूद लेक्स हैं या रिवर्स है उसका पानी जो गर्मी होना स्टार्ट होता है और जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है तो वह भाप के फॉर्म में आसमान की तरफ जाने लगता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। और जब ये भाप आसमान में जाता है और बादल बनाता है और बादल जब एक टाइम ऐसा आता है कि जब बादल को बरसना होता है और तैयार हो जाता है जब बादल, तो इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। और जब बादल बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, जब वह आसमान में नहीं रह सकता तो उसे बरसना होता है, तब वह ज़मीन पर पानी या स्नो के फॉर्म में बरस जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं प्रेसिपिटेशन एंड इट्स कॉल्ड वाटरसाइकिल। दैट्स ऑल। अच्छा, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या चाहिए?